Hello and welcome everyone. I'm Ritunjay and you're watching Pop Diaries channel. Today we are in conversation with two very talented people. Like I would say they are the metaphors of versatility. Like we have seen them in so many characters with so many shades and let me tell you they have shined in all of them. So let's welcome Tilottama Shom and Manav Kaul. Hi guys, welcome to Pop Diaries. Thank you so much. त्रिभुवन मिश्रा सीए टॉपर 2 दिन में आ रहा है. हाउस द फीलिंग? क्या मन में क्या चल रहा है? मतलब गुदगुदी हो रही है अच्छा लग रहा है बहुत और Right. फाइनली इतने साल की मेहनत जो है सब लोगों ने जो की है वो सब लोगों के साथ शेयर करना जो उसका जो सुख है Exactly. बहुत बड़ा सुख है. Exactly, मैम. ये प्रोजेक्ट करने में जितना मज़ा आया है मुझे लगता है कि जिस सिंसियरिटी से बनी है Right. और इसके जो क्रिएटर हैं पुनीत वो इतने कमाल के इंसान हैं Right. और उन्होंने जिस सिंसियरिटी से ये बनाया है मुझे लगता है ये पहुँचेगा लोगों तक पहुँचेगा. मुझे उस पर बहुत बहुत But कॉन्फिडेंस है. जैसा सर ने बोला गुदगुदी हो रही है, थोड़ा प्रेशर भी है इस चीज़ का. नहीं, प्रेशर तो तब होता है कि जब आप ऐसा काम करो जब जो आपको करना नहीं है, बट जब दिल खोल के ऐसे काम करते हो Right, आप जिसमें तो आप ऐसे sure फिर नहीं हो, प्रेशर right. क्या है फिर इसमें? Exactly. वो इसमें बस प्यार ही प्यार है. सही बात है. बट हमने आपको इतने सारे कैरेक्टर्स में देखा है आप दोनों को, और हर कैरेक्टर के साथ हर प्रोजेक्ट के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती है. तो वो प्रेशर के बारे में बात कर रहा हूँ मैं कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती जाती है कि एक अच्छा कंटेंट हमारे फैंस तक पहुँचाना है. सो अबाउट दैट. हम मतलब मैं नहीं ये फील करता हूँ रिस्पॉन्सिबिलिटी क्योंकि मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं यही करता हूँ ना. आई एम पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड ओनली, स्टोरी टेलिंग परफॉर्मिंग वर्ल्ड. Acting. So if I'm not acting, I am directing a play. So it's a part of performing art. So Right. I'm always part of performing art. Right. तो ऐसा कभी नहीं होता है कि मैं सब्जी बेचने लगा जाके या कुछ और करने लगा तो अब प्रेशर है कि अरे मैं वापस आया हूँ एक्टिंग में. Right. सो मैं सालों से इसी पार्ट में तो एंड ऑल्सो यू हैव टू स्पेंड ए लाइफ इन समथिंग. सो मैं ना लाइफ स्पेंड कर रहा हूँ. सो उसके मतलब वो वाला कभी ऐसा ऐसा होता नहीं है कि मेरे को रिस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज मुझे ऐसा लगता है वो जो होता है ना जैसा डाइट लेते हो आप. हाँ. तो आप जो देखते हो सुनते हो टच करते हो अंदर लेते हो आप वैसे ही दिखोगे. Right. है ना. तो इफ़ यू वांट टू लुक गुड यू हैव टू ईट वेल, स्लीप वेल, सुनो अच्छा. तो Right. मुझे लगता है आर्टिस्ट मेरी भी लाइफ है. मेरी सिर्फ इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आई रीड वेल, आई ट्रैवल वेल, आई सीक ओनली गुड स्टफ Observation. Yeah. एंड आई हियर ओनली गुड. तो सराउंडिंग अच्छी है, लोग अच्छे हैं. Right. तो आई थिंक मोर और लेस इफ आई डू सम वर्क वो डिसेंट ही होगा. Right. So about that spending life in characters. So I watched the few episodes and I was like, कि these characters are not easy. Like it's not normal human being or something like that. Maybe it's normal human being as well. But to play these characters, it's not easy. What's your process? How was it getting into these characters? You know, I think your question maybe comes because you related to them. Yeah. Right. But actually, if the writing has depth and Right. if the writing is complex and the writer has command over the language in a emotional sort of way, then as an actor you just have to really show up. Right. Really hard, it gets really hard when the writing is half baked. Right. And then you don't know, you're not a writer, you're trying to fix something only from your perspective, it may not be the best for the entire project. Wahan gadbad ho jati hai. But not in this. One of the things I say often is please make the writer the showrunner if they are up for the job and if they are interested, of course. Right. Because the kind of control then that they have on the show in the day-to-day shooting of it is enormous. Right. And Puneet was our showrunner and our writer-creator, and So that's a plus point. Yeah. So the prep was, of course, like what goes on in your subconscious, in your what your skin feels or what your body feels every time you read it, or and you think about the script, and that thought process is, of course, something that is there for everything that you do. Right. But when a writing is as good as this, actually it's very relaxing to go on set. Right. Exactly. Anu? और मुझे सेम चीज़ कि एज एन एक्टर आपका बहुत सारा जो
जो लेबर है, हाँ. जब आप कुछ प्रोजेक्ट्स होते हैं जिनमें आप लेबर करते हो, Right. आपको मेहनत करनी पड़ती है बहुत, वो बिल्कुल लेबर नहीं था. इट वाज वेरी स्मूथ राइट बिकॉज दे न्यू एवरीथिंग. अमृत और पुनीत ने जितनी मेहनत की थी स्क्रिप्ट पे, आप सेट पे जाते थे, आपके हर सवाल का जवाब उनके पास होता था. एंड स्क्रिप्ट इतनी अच्छी है कि आपके पास बहुत ज़्यादा सवाल होते भी नहीं थे. Right. यू जस्ट वांटेड टू एंजॉय द राइड बिकॉज एवरीवन वाज इन इट टुगेदर. Right. That's the thing, I guess. Vision clear होना चाहिए. Exactly. Great. So especially on OTT we get to see a lot of content and उसको अभी ना content का भी एक जो themes है वो बहुत change हो रही है. We get to see so much violence. We get to see dark themes, obscenity, and maybe sometimes or somewhere audiences are not ready for it. You know. So from creators' perspective, do you think we need to think for a line of morality while creating the content? Do you have any kind of thoughts about this? मतलब हु इज रिप्रेजेंटिंग दिस? So basically, as a creator, I'm asking कि नहीं, मतलब ये जो मोरालिटी का रिप्रेजेंटेशन कौन कर रहा है? मतलब हु इज रिप्रेजेंटिंग द एंटायर कंट्री का मोरालिटी का ब्रिगेड? right, इज देयर समवन हु इज डिसाइडिंग लाइक और टेकिंग कि मैं हूँ जो डिसाइड करूँगा कि Right. मोरालिटी क्या है? मतलब सी व्हेन यू ओपन योर टीवी there are channels. When you open your YouTube, there are things. You click, what you want, है ना? right, And you don't click certain things. right, है ना? तो उसमें आप किसकी कौन वो आदमी है जिसकी आप सुन रहे हो फोन करके कि लिसन, should I click this or shouldn't I click this? Or if I click this, then I won't like this. Then why are you clicking it? Don't click it. So isn't it amazing life that you have options right, that you can choose from rather than you don't have any options? Right. You have only this. तो बस मैं बेसिक जो मैं आप कहना चाहता हूँ कि लोगों को नहीं अच्छा लगती ये बात कि उसके पास सब तरीके का ऑप्शन है. यू वांट टू सी वायलेंस, हॉरर, जैसे मुझे हॉरर बिल्कुल पसंद नहीं है. right, मैं देखता भी नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल वो आइडिया भी नहीं अच्छा लगता. लेकिन मैं थोड़ी आपसे बोल रहा हूँ कि हॉरर बनाना बंद कर दो क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता है. मुझे नहीं अच्छा लगता हॉरर जेन्युइनली. right, बट मैं एक्ट करता हूँ. मैंने घूल सीरीज की है नेटफ्लिक्स की, बट मैं एक्ट करूँगा. मैंने आज तक नहीं देखी वो सीरीज. मैं डरता हूँ. मेरे को बहुत डर लगता है. मैं अकेला रहता हूँ, मेरे को फिर रात में भूत से डर लगता है. तो मुझे लगता है ये जो सवाल है ना, ये आप खुद से पूछो रादर देन हमसे पूछो कि व्हाई यू आर किलिंग योर ऑप्शंस. इतने सारे ऑप्शंस हो, मत देखो. इट्स ऑलवेज अ बटन. नहीं. हाँ. I agree. I think we are grown-ups. right, And I think grown-ups are only making it. I think if you're going to get underage people to start creating work, then I think there has to be certain, I guess, guardrails. right, But I think we're grown-ups. I think we can decide, we can choose. But if you're talking from a perspective of a creator who is writing, I don't think anything for the heck of it is going to work. You know, maybe you can surprise. Oh, there can be a wow factor कि गालियाँ दी इतनी पूरी फिल्म में शुरू किया, you know, ऐसे गाली गाली. के साथ, हाँ, हाँ. but if that's all that is going to be there in your film, it's not going to run, you know. Right. So, or just for sensation have nudity, just for sensation have, you know. I think if those are the things, it's going to be that superficial ride. But even that, if you want to do it, it's my choice whether I want to watch it or not. Okay, great. You know? So as I said earlier, you have played so many different characters with different shades, and I think you have explored many genres. But I want to know कि in near future or in ahead of life or your careers, what that one genre that you really want to explore now? Comedy. Okay, I Comedy. feel like I was cast in a certain role in the beginning of my career, and then people just assumed that there's a certain gravitas that I'm supposed to now be a flag bearer of, Right. which I don't want that wanna break responsibility because there's already very naturally I have, Right. you know, that's why I'd like to explore comedy and I'd like to explore unusual romance. Okay. You know, I think just change up the grammar of, you know, the kind of, Romanticism. I think there's just scope for Right. that in a country that loves love so much. I Right. feel there's a lot that can. But I have talked with so many people, and they always say comedy is the like very difficult genre. What do you Yes, think? it is. That's why it is attractive, Right. and I would love to. May not happen, but I would love it. Okay. So मुझे, मैं ऐसा सोचता नहीं कि मेरे को क्या करना है.
मुझे हमेशा लगता है कि जो जॉब मुझे मिलता है मैं एक्चुअली उसको जब पढ़ने लगता हूँ तो मुझे लगता है इसी का मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, यही मुझे करना है। तो मोस्टली मैं ऐसे ही हूँ, मैं इतनी जल्दी बदल जाता हूँ, गिरगिट की तरह मैं रंग बदलता हूँ। जैसे ही मुझे कोई काम मिलता है मुझे लगता है यही तो था इंतज़ार, यही तो करना था मुझे। Okay, but then that one genre that you're afraid of doing, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ एनीथिंग। but that मैं देखने में it can be challenging or something like that. कौन सा जॉनर होता है जो मेरे को लगता नहीं करूँगा? आई पता नहीं, थिंक I'm only afraid of working with people I don't like. हाँ, You know, मतलब because मैं- फिर बहुत मैं- परफॉर्मेंस करनी पड़ती है. Right. मैं बस चाहता हूँ कि ऐसे बस लोग मिले, अच्छे लोग एटमॉस्फेयर मिले। ऐसा मिले जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करें। Right. Yeah. जितना मतलब हम जैसे आपके साथ इंटरव्यू करने में मजा आ रहा है, अब बोलो ऐसा कौन है इसका इंटरव्यू करने में मजा आता है? नहीं, आपके साथ मजा आ रहा है तो यही करना है। Okay, great. So yeah, that's it. Yeah, I have just one game. So we have a game now. So as our title says, CA topper. It has a CA topper in it. So I'll take some names, and you guys have to decide or guess that this particular celebrity will, like, in which profession they will top. Oh, ये कर सकते Okay. try. So I'll take some हार ही names. जाएंगे। Okay. Yeah. Okay. So let's begin with King Khan, Shah Rukh Khan. बिजनेस Business. या Do you agree? कैन बी अ ग्रेट बिजनेसमैन। नो ही इज एक्चुअली। He is. Yeah. Do you agree? I think he would make a great heart surgeon. नहीं, मुझे लगता है I was waiting for that. नहीं, मुझे लगता है he is actually should be a person to represent our country Oh. outside everywhere because he talks so beautifully. Yeah. He as मतलब उसके command उनकी इतनी अच्छी है and he is the person who can represent He us. speaks a love language which is very Which is very universal. Yeah, exactly. So, matters of the heart. If he was, yeah. Okay, moving on. Deepika Padukone. You know, she's so athletic. I can almost see her like, be a great sportswoman. Yeah, You know, actually yeah. badminton. Badminton, yeah, her Right. dad. Yeah. Okay. Vicky Kaushal. His smile is so magnetic. Is there any profession for smiling? Profession. They can't be acting. They can't be actors. I think he would be very good in a job where, he has to give very bad news. And you need people with a lot of warmth to Okay. deal with bad news. So if Vicky gave the bad news, it would be easier to take it because of the empathy, general empathy Yeah, that he yeah. has and Okay. the warmth that he has. It would be easier to accept and, क्या बात है? ये बिल्कुल सही है। क्या बात मैं है? भी बैक करता हूँ। मैं गुड आंसर। Okay. Alia Bhatt. Alia Bhatt, my goodness. आई थिंक उनको आलिया को तो एक्टिंग करनी चाहिए, बहुत अच्छी एक्टिंग करते हैं। She's amazing. उनको Definitely. बाकी तो मैं She's जानता made हूँ। for it. Yeah, she's made for it. I think she would be like, I would love, like, I can imagine her, like, being a general of an army, Okay. Okay. and I see that, like Napoleon, Right. like, कद छोटी leading- हो सकती yeah, है, okay. but presence इतनी fierce है, है, इतनी बड़ी right. है. I think she would make a natural leader. Right. She'd be a great leader. Okay. Akshay Kumar. Akshay Kumar. I mean, can run a karate academy. Karate Oh, Academy. yeah, definitely. Priyanka Chopra. प्रियंका। आई थिंक प्रियंका चोपड़ा को एक फर्म खोलनी चाहिए जिसमें वो सिखाए कि ये जवाब कैसे दिए जाते हैं। Because she is Like a very- finishing school. Yeah, Yeah. she is very good at it. वो जो उनका इंटरेक्शन है Right. मीडिया से, लोगों से, Right. जो उनके इंटरव्यूज होते हैं, वो इतने कमाल बोलती हैं। वो एक्चुअली एक कोई होना चाहिए स्कूल जिसकी वो रिप्रेजेंटेशन करे। क्या बात है? I think if people are trying to navigate like different, go from one profession Right, to another right, profession, right. like navigate different cultures, She brings the versatility. something that requires you to straddle two different worlds. Right. I think she would be, Something like that. yeah. Okay, now we have the last one, Ranbir Kapoor. Ranbir.
रणबीर तो मेरे को मैं ब्लैंक हो रहा हूँ। मतलब डॉक्टर हाँ मतलब एक अच्छा डॉक्टर बन सकता है कि I guess even sports person, like he's also into really good in Yeah. sports. Yeah, as Huh. but well. you know he has the sense of like Calmness. calmness. So I feel Grounding. like Yeah. you know doctors have to deal with crisis Right, moment to moment, you know. Right. So I think he Right. Actually, we have two more. Tilottama show. oh You tell me. You Manav will tell. अच्छा प्रोफेशन गार्डनर हाँ Okay. This is what's the because I know that she loves like plants. Okay. वैसा Great. Manav. I know he has. I can say writer, but he's already a writer. Right. I can say many things, but he's already done that. But I think he would be someone I can imagine, like someone who is a mountain climber. You know, Okay. man alone with this Oh. magnificent Musafir. with nature. Yeah. You know, I can see him from far away. You know, climbing a grand mountain. क्या बात है क्या बात है. Okay, thank you so much guys Thank for being on you. Prop Diaries. Thank you so much for watching this video. Please watch Tribhuvan Mishra CA Topper on Netflix. Thank you so much. Yeah. हाय मैं हूँ मानव कौल और मैं हूँ तिलोत्तमा शोम. और आप लोग देख रहे हैं पॉप डायरीज Thank you.